Okay, so the name of this set is Rating to Horticulture Graduates. The set is Kaveri Seed Company Limited is looking to recruit some horticulture graduates. After taking the written test, the company interviewed 5 candidates: Adi, Balram, Chandra, Daksha, and Ehsan. On the basis of ratings in the 5 different skills, S1 to S5 as given below. So S1 is basically for education and work experience, S2 is for strength, S3 for aspiration, S4 for motivation, and S5 for prioritization. Based on the interview, the company assigns rating to each of these 5 skills, where 5 stands for excellent, 4 for good, 3 average, 2 below average, 1 is poor. The total score of the candidate consists of 2 parts: the marks in the written test and the average rating in the interview. If a candidate gets a rating poor in any skill, he is not eligible to get selected for the selection process, right? A candidate needs to obtain an excellent rating in at least one of the skills to be eligible. तो eligible होने के लिए आपको you need at least 1 5 and you should not have even 1 1. आपको 1 rating बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए और आपको 5 rating at least एक बार मिलनी ही चाहिए, right? Further, some information is given to us. What is average rating? Now, the average rating in the interview of any candidate is the simple average of rating obtained by him or her in S1, S2, S3, S4, and S5. So, in सबका average लेना है, simple average, right? Some facts are also given to us. No candidate has got the same rating in 3 skills. So, the maximum rating can repeat for any individual is for 2 times, right? Chandra and Ehsan are rated excellent in exactly one of their skills. Now, for Chandra and Ehsan, if we write it down, for Chandra and Ehsan, E will come exactly, this 5 rating will come exactly 1 time, excellent rating, right? And for Balaram, this for 2 times. So Balaram has received 5 for 2 times. So this we need to remember. Now I said बहुत बेसिक सा लग रहा है बच्चों, इसमें कुछ ज्यादा मुझे नहीं लगता पॉइंट है. तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन, so the condition is that B has received 5 in 2 parameters and C and E have received exactly 1. तो ये गिवन था. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If Daksh is not selected, then what is the maximum possible value of his average rating in interview? Daksh select नहीं हुआ है, उसका एवरेज रेटिंग मैक्सिमम कितना हो सकता है? नाउ फॉर एवरेज रेटिंग टू बी मैक्सिमम, वी नीड टू गिव हिम द मैक्सिमम रेटिंग एज पॉसिबल, राइट? तो जब दक्ष को मैक्सिमम रेटिंग देते हैं तो दक्ष को 5 देते हैं, राइट? 2 टेस्ट में 5 5 दिया. नाउ इन थर्ड टेस्ट वी कैन नॉट गिव 5. व्हाई सो? बिकॉज द वैल्यू कैन नॉट रिपीट फॉर मोर देन 2 टाइम्स. तो हमने 2 बार 5 दे दिया है. नाउ दक्ष को एक बार 2 डेफिनेटली मिला हुआ है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट. अब 2 वैल्यूज बची है. क्या हम दक्ष को 4 4 दे दें? बट द पॉइंट इज दैट दक्ष इज नॉट सेलेक्टेड. तो यदि सेलेक्टेड नहीं है तो क्यों नहीं है? फिर सेलेक्टेड के लिए 2 मैंडेटरी कंडीशंस थी. द फर्स्ट वन वाज ही शुड रिसीव 5 इन एनी ऑफ द S1, S2, S3, S4, S5. किसी एक में तो एटलीस्ट उसको आना चाहिए था, वो आ चुका है. एंड द सेकंड मैंडेट कंडीशन वाज ही शुड नेवर रिसीव 1 रेटिंग. तो यदि दक्ष का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके 5 तो आ चुका है, दैट डेफिनेटली मींस दैट दक्ष का 1 रेटिंग भी आया होगा किसी ना किसी टेस्ट में. और एक रिमेनिंग टेस्ट में क्योंकि मैक्सिमाइज करना है तो हम इसे 4 दे देते हैं. तो द टोटल रेटिंग इज 17. नाउ एवरेज रेटिंग पूछा गया है, तो फॉर एवरेज वी नीड टू डिवाइड इट बाय 5, so that comes out to be 3.4. So 3.4 is the average rating for Daksh. Now moving to second question. If Adi selected, okay, so I need to write 5 2 times over here, and Ehsan और चंद्रा को एक एक बार 5 मिला है. Okay, so if Adi selected, what are the minimum possible marks obtained by him in the interview? तो आदि के 5 मार्क्स आने हैं. Now definitely उसका 1 तो नहीं आया है. 1 आता तो वो सेलेक्ट ही नहीं होता, राइट? आदि का और कोई स्कोर 1 स्कोर इज गिवन टू अस, दैट इज 3. So we need to focus on these 4 scores. Now the condition is simple. Adi is selected, we cannot give him 1, but to minimize his rating, क्या हम उसको 2 2 दे दें 2 बार? क्या हम एक बार और 3 दे दें? But then we need to keep in mind, आदि का सिलेक्शन हुआ है, so he must have secured 5 as well. तो एक 5 तो देना ही पड़ेगा. हमने बहुत बेसिक रेटिंग दी है, उसके बावजूद भी एक 5 देना पड़ेगा because आदि got selected, right? So this is the minimum possible marks obtained by him in the interview, and the marks are, this is how much? 5 and 5 and 5, 15. So average comes out to be 3. Now the marks are 20 into average rating, so 3 into 20, 60 marks he must have scored in the interview.
और केवल यही पूछा गया था। फाइन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the maximum possible total marks of Chandra, including written test and interview? Now, for Chandra, we need to include written test also. Now, in the written test, he secured 72% of 300. That is basically 216 marks. And we need to maximize his score. So, we need to focus on PI marks. Now, in 5 PI marks, acha, jo basic condition that was B has received 5 for 2 times, C and E have received 5 for exactly 1 time. For exactly 1 time. तो हम एक से ज्यादा बार नहीं दे सकते, राइट? वी नीड टू मैक्सिमाइज द स्कोर. सी के पास एक 3 ऑलरेडी है, कैन नॉट हेल्प विद दैट, राइट? वो दे रखा है. वी कैन नॉट गिव वन मोर 5 टू सी because in the question it is explicitly mentioned that exactly one of the skill is got 5, right? तो 5 एक और नहीं दे सकते. तो कोई बात नहीं, 4 दे देते हैं. तो हमने 2 बार 4 दे दिया. 3 एक बार आ चुका है, एक बार और 3 दे देते हैं, राइट? इसका टोटल करें तो वी हैव 8 and 16 and 19. Now if we calculate the average, so this is 19 by 5, this is the average, and we need to multiply this value by 20 to get the PI score. See, 20 into average rating, right? So this is basically how much? 76. Now this is the marks in interview part, and this was the marks in the written test. So total marks is 216 plus 76, that is 292. Now this is the maximum possible value for Chandra. Last question. What is the absolute difference between the maximum possible total marks obtained by Balaram, so B ka maximum, and the minimum possible value for E? E ka minimum. इन दोनों का difference लेना है. And they are talking about the total marks. So first of all, B का जो total marks है, that includes written test का plus interview का minus E का written test का and then interview का, right? So B का written test is 68%, right? This is 68% of how much? 300. Now that makes it 204, right? और इसका E का written test में is how much? 76%. 76% of 300. So that makes it 228. ये तो इनका स्कोर है रिटन टेस्ट में. Now we need to maximize the score for B. तो जो remaining B का है, B के we were having 2 5s if I'm not wrong. Let me just check. हाँ, we were having 2 5s in case of B. तो B का ये जो स्कोर है, इसमें out of 5 scores we already have 2 5. Now we need to maximize this, right? एक बार B का 2 स्कोर given है, क्वेश्चन में given है, तो जो रिमेनिंग 2 है दोनों को 4 ले लेते हैं. दैट विल बी द मैक्सिमम स्कोर ऑफ बी. कितना होता है ये बच्चों? तो दिस इज 5 plus 5 10 12 and 20. Now the average is divided by 4 and then we need to multiply it by 20 again. So this comes out to be 204 plus 100, right? ये I have done a silly mistake over here. I need to divide it by 5. So this will be 4. ये 80 होगा बच्चों. मैंने गलती से 4 से डिवाइड कर दिया था. ओके फाइन. तो 284 is the highest score for B. Now for E, 228 he has already secured in written test and in interview. We have 5 scores again. Now we need to minimize this value, right? For E to score minimum, E have already scored 1 5. ये हमको क्वेश्चन में गिवन था. यहाँ पर E has already scored 1 5. तो ठीक है, एक 5 देना पड़ेगा. एक 4 E के पास पहले ही लिखा हुआ है. And both of them are selected. तो हम E को 1 दे नहीं सकते हैं क्योंकि सिलेक्शन हुआ है. कोई बात नहीं, 2 दे देते हैं. और अब 2 2 से ज्यादा बार नहीं दे सकते हैं because we cannot repeat the value more than 2. So ठीक है, एक वैल्यू हम 3 दे देते हैं. So the total comes out to be 5 and 4 9 and 4 13 16. So this is 228 plus 16. We need to divide it by 5 to find the average and then need to multiply by 20 to get the PI marks. So this is basically 64. ठीक है, तो minus 228 and minus 64. So the difference from here comes out to be 8. So the absolute difference was of 8 marks. So I hope ये सेट अच्छे से क्लियर होगा आपको. ये इतना डिफिकल्ट कैटेगरी का सेट नहीं था, बहुत इजी था, बहुत जल्दी सॉल्व हुआ, कोई भी कैच नहीं था इस क्वेश्चन में. तो ये मेरे हिसाब से आपको मैक्सिमम 7-8 मिनट्स के अंदर चारों क्वेश्चन सही कर देने चाहिए थे. थैंक यू.